Hind to all of you. My name is Navjot Singh, and today I will be sharing with you the post-selection challenges and opportunities in the Employees Provident Fund organization. In the earlier video, we had discussed about the exam, how we can approach it, how we need to prepare about it, and in this video, we will be understanding about the job profile, about the perks, salary, and the training aspects, and whether you should join this organization or not. So friends, this exam is conducted by UPSC. The exam is not conducted every year, so whenever the opportunity comes, we must grab it. So as far as the post-selection training is concerned, the training of this post as an enforcement officer is done in Pandit Deen Dayal Upadhyay National Academy of Social Security. After the training, you are allotted different zones, zonal offices. From there, you will be mandated to work either in the zonal offices or in the regional offices. So as per the perks and privileges are concerned for this particular job, so you will be getting a starting salary of around 60 to 70,000, which will be increasing every year as per the government rules and regulations, as well as the increments. Apart from that, you will be given certain perks, certain medical facilities, transport facilities, other briefcase facilities, all these little bit facilities you're going to get. Apart from that, friends, you will be getting an opportunity to serve in one of the most prestigious organizations. Fine. So here, apart from this, you are mandated. See, what is the role? What is the role of an enforcement officer? You are going to enforce the Employees Provident Fund Miscellaneous Provisions Act 1952. You will be the main actor of the organization. You will be taking care of the different aspects that are required. First of all, as an enforcement officer, you are required to work in office as well as in the field. When you are working in the office, you are supposed to take care of the accounts. You will be charged with the duties of the public relations officer, or the pension division, about the vigilance division, about the RTI, about the caretaker division. So there are lot of divisions within the organization. For example, you have to dispel the RTI inquiries. There are vigilance matters. You may be appointed in the vigilance section. There you will be mandated to inquire into certain frauds and embezzlement that happen, how certain employers they do frauds, and how money is withdrawn from the funds of the people illegally. So that also is your target. So as far as the EPF Act enforcement, so when you're working as an enforcement officer, you will be required to visit the organizations, establishments, and you will inspect their records, their balance sheets, whether they are complying with the EPF Acts. So friends, here I need to tell you that the employers which have more than 20 employees, any organization or establishment which has more than 20 employees, it is required to mandatorily register themselves with the Employees Provident Fund organization. See, it is a social security organization. It takes care of the social security rights of the laborers who are working there. What these employers do, sometimes what they do is they don't register the workers. They keep them on contractual basis and deny them their basic services. So that is actually a challenge here that needs to be avoided. So our task as an enforcement officer is to enforce the labor laws, is to enforce that such embezzlements don't happen. By the 15th of every month, if the employer has not submitted the provident fund into the into the account of the PF account of that establishment, then he can be penalized. Inquiry or an action can be initiated against him. So this is about it. Sometimes when we make surprise inspections, so we do see that there are a lot of workers working which are beyond the registered limit. So then they are penalized on that front also. So similarly, these are the things which need to be, which will be in your matter of purview, under your charge you will be doing. Apart from that, you have to understand that when you are working in the office as well, there are a lot of people who will be coming to you. For example, I will tell my own experience. There would be an old lady who would be coming, and she has not been given her pension, her widow pension. So in that case, it is your responsibility, and it becomes your great opportunity to ensure that she gets that due pension in time. Sometimes they don't have the right documents, so you will have to guide them properly as well on a humanitarian basis. You have to take care. Sometimes it's just you have to go beyond the duty. You have to ensure that social security, social service. For example, someone has died and his EDLI, deposit linked insurance. There are certain issues. The employer is not giving the
requisite documents. So without documents, our hands are tied. We cannot ensure that the disbursal of the funds happen. So we have to ensure sometimes we have to go out of the way to encourage the employers as well as the subscribers that you really get your documents ready, get yourself properly registered. Apart from that, there is a universal account number. So universal account number is given to ensure there is seamless portability, seamless transmission across organizations and across regional offices anywhere you have worked in the country. For example, a laborer, he's working here and then he's going to some other state, so his provident fund account will be transferred from this office to next office. So this ensures that he's not denied his benefits. So this is basically, you will be mandated with enforcing the labor laws. You will be mandated with compliance, ensuring compliance. In fact, as an assistant provident fund commissioner, there are quasi judicial powers. You have the powers as a magistrate to decide on certain matters. You have a power to conduct inquiries and inspections under section 7A. Then there are damages you can impose. There is a recovery section also. So all these are the activities that you will be ensuring. In this way, you will be ensuring the overall the social security is effectively given. So as far as whether you should join this organization or not, see friends, this organization will give you an opportunity to work in a good decent government setup. This will provide you all those facilities, that opportunity to provide your services to the country. But at the same time, if I were to guide you, before this I was working in intelligence bureau. So for me, having served about half a decade in the bureau, that transition for me was a little difficult, because there I was into operations, I was into other things, and here the task and the job profile is totally different. So for me, it was a little difficult initially to adjust and to maneuver my personality, because having served there, my personality type also was suitable to that kind of job, where we would be going out and conducting operations, dealing with internal security challenges. But here it is a bit sedentary, more of an office work. It's a 9 to 5 job mostly. Even when you go inspections, you go within the time limit, and that doesn't happen daily. So apart from that, I believe it is only a person. See, don't go by what is going around in the market. As a person who has served in different organizations, I will tell you that whenever you choose to join an organization, first assess yourself. अपने आप को assess करें कि आपका skill set किस चीज़ के ज़्यादा सूट करता है. अगर आप थोड़ा थ्रिल पसंद करते हैं, आप थोड़ा डायनामिज्म है आपकी पर्सनैलिटी में, आप थोड़ा आउटगोइंग है, आप थोड़ा एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, तो जैसे मेरा था इंटेलिजेंस ब्यूरो, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है. जहाँ तक EPFO की बात है, ये थोड़ा सा आपको विद इन द कन्फाइंस, देखिए इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बिकम अ कमिश्नर, द कमिश्नर डज नॉट एंजॉय द सेम पावर्स एज ए डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट. जब आप एक IAS और IPS से कंपेयर करेंगे, उस पर्सपेक्टिव से आपको उस तरह की प्रिविलेज और उस तरह की प्रेस्टीज शायद एंजॉय करने को ना मिले. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगी. आपको अपना एक मैंडेटेड टास्क दिया गया है, आपको उस विद इन दैट परव्यू आपकी पावर्स रहेंगी, आप वो अपना काम कर पाएंगे, और आपको मौका मिलेगा कि आप डिफरेंट सेक्शंस में अपने सीनियर्स के साथ काम कर पाएँ. अब जैसे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाते हैं, तो इनिशियली वो अपने ऑफिस के इंचार्ज नहीं बनते हैं, उनको रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर RPFC 1 और 2 तक बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना एक ऑफिस इंचार्ज बनते हैं. जबकि आप देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में एन IAS और एन IPS, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ हिज ऑफिस. सो सिमिलरली दीज आर द थिंग्स. आप सब कुछ कंसिडर करके, यू कंसिडर ऑल द थिंग्स, ऑल द एस्पेक्ट्स बिफोर ज्वाइनिंग द सर्विस एंड बिफोर फिलिंग द फॉर्म. यू शुड प्रिपेयर, आई वुड सजेस्ट यू शुड प्रिपेयर. एंड उसके बाद अपना पर्सनैलिटी टाइप असेस करें, अपना स्किल सेट असेस करें, और जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी असेस करें. किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले आपको अपनी सूटेबिलिटी उस जॉब के हिसाब से देखनी है, ठीक है. तो उस हिसाब से आप करें अपना, और ऐसे ही आपका एक अच्छे से हो जाएगा. इस तरह से आप प्रिपरेशन का हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया. इसमें हमने एक प्रोफाइल देखा कि किस तरह से क्या जॉब प्रोफाइल है, आपको कैसे सोशल सिक्योरिटी. देखिए, देश में सोशल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है. आपने कोविड में भी देखा कि जब कोविड आ गया था तो लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई. तो उस केस में EPFO ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया. उन्होंने जो कोविड एडवांस इशू किया ताकि लोगों की मदद की जाए.
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। तो इस तरह की स्कीम्स इसमें हैं, आपको एक मौका मिलेगा लोगों की परेशानियों को हल करने का। जैसे आप इंस्पेक्शन भी करेंगे अगर सर्विस फील्ड में जाके, तो आप उन वर्कर्स को उनके राइट्स दिलवा सकते हैं। आप किसी स्कूल में किसी टीचर को उसका वो ड्यू नहीं मिल रहा है, आप वहाँ पे भी इन्फोर्स कर सकते हैं। किसी होटल में किसी वर्कर को राइट नहीं मिल रहा, आप वहाँ पे भी उनका राइट्स इंश्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अवसर मिलेगा कि आप जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो एम्प्लॉयर्स के अंडर काम करते हैं, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, उनको आप उनके राइट्स दिलवाएं। तो इसी तरह से आप अपना डिसाइड करें सोच समझ के कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है और किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया, एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव, ताकि आप समझ पाएँ डिसीजन करने से पहले। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी, हमने जब ज्वाइन किया था, तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं था। तो मेरा ये एक मकसद है कि आपको मैं उस चीज़ के प्रति जागरूक करूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ज्वाइन करें तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सूटेबिलिटी जज करें पहले, कि मैं क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल हूँ, या क्या वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सूटेबल रहेगी। क्योंकि हमारा जो स्किल सेट यूनिक होता है, कोई चीज़ एक बंदे के लिए सेट होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। तो इसी मैसेज के साथ मैं आई विल टेक यू अ लीव। आई विल जस्ट लीव यू दिस मैसेज दैट वट एवर यू डू, डिसाइड इफेक्टिवली, एंड both the organizations, even the bureau and the EPFO are very good organization। और अगर इसके अलावा भी आप कोई और प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में आना, आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं, आपको उस प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है और अपने आप को समझना है, और फिर ही आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक ही लाइफ है हमारे पास, उसमें हमें अपने पोटेंशियल को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप एक बेहतर डिसीजन और बेहतर तैयारी करेंगे अपने एग्ज़ाम्स की। इसी संदेश के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।